Hello all. Today we are going to study the Endgame. This Endgame I have selected from the book which is called Silman Endgame book. So this is very nice book. I just wanted to show whether I don't know whether you are able to see it or not, but this is a very famous book written by the Jeremy Silman, and this is the latest. I think so. 2 years back, this book has been published, and in this book there are many chapters like this chapter started with the unrated player below 999 rating. Then the part 2 will be endgame for class E, means 1000 to 1200. Then class D, 1200 to 13 or 1400. Then part 4, which is class C, 1400 to 1600. And part 5, 1600 to 1800. Part 6, 18 to 2000 rated, and above 2000 to 2200, and up to 2200 to 2400, and again after that it is like grandmaster level puzzles are there. This is a wonderful book. अगर अगर आप यहाँ पे बेसिक प्लेयर हो तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट बुक है ये, और अगर आप एडवांस प्लेयर हो, जैसे आपकी रेटिंग 14 या 1500 है, तो ये बुक आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने बेसिक प्लेयर्स के लिए। तो आई थिंक सो यू कैन सी द टाइटल ऑफ दिस बुक। इस बुक में से पहला जो चैप्टर है वो हम स्किप करते हैं क्योंकि बहुत बेसिक है, तो हम डायरेक्टली जाते हैं कि 2000 रेटेड में हम ये पजल देख रहे हैं, 1800 टू 1700 टू 2000 रेंज में। तो ये मिक्स ऑफ पजल्स है इस बुक में से। और लेट्स सी हियर, दिस इज अ पोजीशन एंड वाइट टू प्ले एंड विन द गेम। नाउ टेक ए 2 मिनट, आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू पॉज दिस वीडियो, और पॉज करने के बाद पहले ट्राई करना है आपको सॉल्व करने के लिए, वीडियो पॉज करके, और आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने का एंड चेक कीजिए कि आपकी मूव जो है वो मैच होती है कि नहीं। तो पॉज योर वीडियो। हियर द मूव इज किंग f6. So now king d7. Now he can black can push the pawn a2, king e6, and now here black can create a queen, but this is gonna be a checkmate. What happened if you play king f6 now? If black play king d7, then white can go king to f7. If he captures, still you can make a queen, and of course if you push the pawn, obviously this is like white can easily win this game with the winning the queen. Let's go for the next puzzle. Now, please check the coordinates also before solving the puzzles. This is a white to play. ये white king जो है वो black के side में है, तो ऐसा मत समझे कि uh, हमने flip किया है board, हम white के side से ही देख रहे हैं board. Now it's a white to play, and let's check it out. Can white win this game? Pause the video. Okay. So move here is pawn push c5. Now, of course, he need to take d takes c, pawn takes, pawn push, queen, and now pawn push to c7. अब यहाँ पे एंड गेम का एक रूल हमें याद रखना है, अगर किंग पॉन अगेंस्ट क्वीन एंड गेम है, और पॉन ए फाइल में है, सी फाइल में है, एफ या फिर एच फाइल में है, तो ये गेम ड्रॉ होता है। अब ये कैसे ड्रॉ होगा? लेट्स सी, ये ब्लैक टू प्ले है, तो ब्लैक विल गिव अ चेक, 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 and now white will go to the a8, and now he will try to give a check again. और ये जो पोजीशन होती है, इसी पोजीशन में हम ये देखते हैं हमेशा कि ऐसे पोजीशन में जो गेम है वो यहाँ पे विन होता है ब्लैक के लिए, अगर किंग c1 पे या c8 पे जाता है इसके पीछे। बट इस पोजीशन में जो व्हाइट किंग है वो c1 पे नहीं जाएगा या c8 पे नहीं जाएगा, किंग विल गो टू द a8। अब यहाँ पे अगर क्वीन टेक्स स्पॉन होता है तो ये गेम स्टीलमेट हो गया, दिस गेम इज ड्रॉ। और अगर ब्लैक फिर से चेक देता है तो इस चेक का कोई यूज नहीं है, क्योंकि दिस गेम विल बी अ ड्रॉ, ये गेम वैसे भी ड्रॉ हो जाएगा, दिस इज गोना बी अ ड्रॉ। अगर ये पॉन सी पे नहीं होता और सपोज ये पॉन अगर बी पे होता, तो शायद ये पोजीशन में किंग को पॉन के पीछे आना पड़ता, और उस पोजीशन में ब्लैक अपना किंग मूव करता, और जैसे किंग फ्री होता है फिर से चेक करके फोर्स करता है ये किंग के पीछे जाए, और ये जो किंग है धीरे धीरे आगे आता है, और ये गेम यहाँ पे विन हो सकता था। तो अगेन रिमाइंडर के लिए, इस पोजीशन में अगर आपका पॉन यानी व्हाइट का पॉन ए फाइल पे है, सी फाइल पे है, एफ फाइल पे है या एच फाइल पे है, किंग पॉन इन गेम में ये गेम ड्रॉ हो जाएगा, इवन यू आर अपनॉट हैविंग अ क्वीन।
लेट्स गो टू द नेक्स्ट पोजीशन। देखो यहाँ पे सी पॉन है। अ, तो अगर ये देखा जाए तो ये गेम जो है फिर से ड्रॉ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है क्योंकि व्हाइट के पास और एक पॉन है। तो देखते हैं इस पोजीशन में क्वीन बी टू, यू कैन म्यूट एंड यू कैन ट्राई इट फ्रॉम योर साइड। क्वीन बी टू, किंग ए एट, and now here king a8. The problem is now if black queen takes this pawn, the white still have a one pawn to push, and that's why it's not a draw. क्योंकि यहाँ पे black अपना move queen move कर लेगा, and now black can just play his king, or he can push this pawn further after taking this. Sorry, he can push this pawn after taking the d pawn, and this game will be again black win. तो यहाँ पे ये draw इसलिए नहीं हुआ क्योंकि white के पास और एक pawn था. Let's go second, one more position. This is very simple. White to play. You can pause your video. White to play and win the game. Now, if you see this position, it's very simple win because white is creating a queen and now this queen will get captured and this is a draw. Sorry, this is a win for white. Now let's see the second position. अब देखो यहाँ पे king जो है ये pawn के पास है. So now pause your video and check it out. White to play. Is this a game a draw or win? Take your time. Pause video. और उसके बाद चेक कीजिए कि आपका जो गेम है उसका रिजल्ट क्या होता है. ओके, इन दिस पोजीशन आई एम गोइंग टू शो यू द सॉल्यूशन. pawn push, a7 h7, queen, and now here king to g1. now because king g1 I told you that अगर ये pawn अगर a फाइल पे है, c फाइल पे है, एफ फाइल पे है या फिर एच फाइल पे है, अगर ये फाइल पे अगर पॉन होता है तो गेम क्वीन पॉन एंड गेम में भी ड्रॉ होता है. क्योंकि अब अभी यहाँ पे व्हाइट विल गिव अ चेक. White will try to get closer to the king, and after this position, this check, and here black will go king to h1. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर व्हाइट पॉन किंग पुश करता है तो ये स्टेलमेट है, तो यहाँ पे व्हाइट को फिर से चेक देना पड़ेगा. जैसे ही व्हाइट फिर से चेक देता है, ब्लैक फिर से किंग h1 पे जाएगा. अगर इवन से भी चेक देता है तो भी किंग विल टू गो टू द जी अगेन, और ये जो गेम है यहाँ पे फिर से ड्रॉ हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे व्हाइट के पास कोई वेटिंग मूव नहीं है, ब्लैक के पास कोई और पॉन नहीं है, और यहाँ पे अगर किंग मूव करने की कोशिश भी करे, दिस इज गोना बी अ स्टेलमेट. लेट्स गो टू नेक्स्ट. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पजल एंड आई विल जस्ट आस्क यू टेक टेक द 2 to 3 minutes. इट्स अ व्हाइट टू प्ले अगेन. अब देखो यहाँ पे ब्लैक का जो पॉन है ये सिंपल है, यहाँ पे पुश हो रहा है ये और ये क्वीन बनने जा रहा है, और व्हाइट का जो पॉन है ये भी क्वीन बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ब्लैक का किंग है इस पोजीशन में जो कि पॉन से बहुत क्लोज है. Now take your 2 minutes, take your 2 to 3 minutes and calculate here. It's a white to play. Is it possible white can make a draw, or this game will be ended as a black win? Okay. Now this is very interesting puzzles. Uh, now in this position, white is going to play king g7. अगर आपकी ये पहली मूव है तो बहुत राइट है. अगर आप इसके अलावा और कुछ भी खेलते हो तो ये गेम जो है ये गेम व्हाइट हार जाएगा. व्हाइट इज गोना लूज दिस गेम. Uh, now black is having option. He can play the king to b6, or he could push the pawn. Now let's see. He will push the pawn on h4. Now king will go to the f6 here. Now if he push the pawn again, now white will go king to e6. If you push pawn again, now white will go. Now here instead of push king play, white will go to c7. And now if black make a queen, white will also make a queen. It's a check. So it will be the white remain move, and this is gonna be a draw because both players having the queen. Now let's say in this position, if you play h4, and in this position, instead of this pawn push, if black played king b6, so here white will go for king e5. Now let's see if king takes pawn, then black will timely raise to this pawn, and this pawn is gonna capture by the white, और ये गेम जो है ये फिर से ड्रॉ हो जाएगा. तो यहाँ पे किंग g7, अगर पॉन पुश होता है तो किंग विल गो f6, पॉन पुश होता है तो किंग विल गो टू द e6. अब यहाँ पे अगर फिर से किंग b6 प्ले करता है तो देन व्हाइट विल गो किंग टू d7. नाउ व्हाइट इफ ब्लैक विल पुश द पॉन and both players will make a queen. Now there is no problem with this check for the white.
and the the maximum is possible that this game will be a draw. Let's go next puzzle. This is diagram 218, and this is white to play, and you need to calculate is white able to make a draw, or this is gonna be win for the black. Take your time, pause the video, and try to solve it. Okay. Okay. So answer is king g6 again, a4. So white is going to play a4 here. Again, king f6, a3, king e6, a2, and now here pawn push c7. Again, the very similar situation. If you played king to b7, then king to d7. If you make a queen, this make a queen, and white will also make a queen. It's a draw again. But what happened if black played after king to g6? He will play king b6. Then we'll go for king f5. Let him capture the pawn. And now, if you see this position, the white is timely reaching to this position, and once white will reach to the behind the pawn on the a file, this is going to be a draw. And if black decided to push the pawn here, then king e5. Remember this, we have to control this a also, and we have to come to closer. Now suppose if we push the pawn, then this is going to be a pawn push, like pawn push, and black player will make a queen. But if black capture this pawn, then this king will go to the d4, and on timely this king is going to reach to this position, and this is again draw. Let's go to the next position. This position is again white to play. How should white continue this game? This is Zugzwang position in the endgame. White to play and make a draw. Or in fact, you can try for the win also. Pause your video. Okay. So move here is king b5. Of course, you might have also selected the same move. King c7, king c5. Now here, there is a trick. If king d7 black will play, this game will be difficult for the black to survive. ये गेम ब्लैक हार जाएगा अगर ब्लैक यहाँ पे किंग डी सेवन प्ले करता है तो. सो ब्लैक हैज टू गो फॉर किंग टू सी एट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूव टू कीप द पोजिशन हियर. क्योंकि यहाँ पे अगर डी सेवन आता है तो व्हाइट विल कैप्चर, और इस पोजिशन में जो है ये गेम ब्लैक हार जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो पॉन है ये डायरेक्ट पुश हो रहा है. दिस पॉन इज गोना पुश डायरेक्टली. तो इस पोजिशन में ब्लैक हैज टू गो किंग सी एट, and now if we capture, and this game is a draw. और ये गेम ड्रॉ है. आप स्लो मोशन में बैकवर्ड करके आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं. Okay, let's go to this position. Let's finish the topic here of king pawn endgame. This is a black to play, and can black make a draw this game, or white is gonna win? So let's see. It's a white to play. So white played here king f5. Uh, okay, here's the trick. He cannot go f8. This f8 is a blunder. Now let's see if he played f8, and king d8, and this position is win for the black. But black, if white will go king h8, this game will be a draw. And you can see here in this position, this is gonna be a draw. तो यहाँ पे डिसाइड करता है कि किंग अगर f8 जाता है तो ये गेम व्हाइट हार जाएगा, और किंग h8 जाता है तो ये गेम ड्रॉ हो जाएगा. चलो लेट्स गो रुक फॉर एंड गेम. व्हाट विल बी द रिजल्ट, फर्स्ट कैलकुलेट कि ये पोजीशन व्हाइट कैसे जीत सकता है. हाउ व्हाइट कैन विन, बिकॉज व्हाइट इज हैविंग द पॉन एट 7th rank. It's a white to play and win the game. So take a 2-3 minutes here and calculate. It's a white to play and win the game. Pause your video. So white will play rook to c1, rc1, rc8, rb8, and now rook to b7 check. But here
कैन बी गो रुक किंग B7। अब देखो यहाँ पे रुक B7 पे शायद ये मूव आ जाएगा व्हाइट का, और ये हो सकता है ये गेम ड्रॉ हो जाए यहाँ पे। सो इस पोजीशन में आफ्टर दैट रुक टू A2, किंग टू B7। लेट्स कैलकुलेट। रुक B check, king A6, check, king here, check, and in this position we'll go for king to C5. Now this game is lost for the black, because even if he give a check, he will just play king to D4. And after this position, even if you play this king A2, it will be queen for white will make a queen, and this game will be again white win. So ये था सिलमन एंड गेम, और ये सिलमन एंड गेम का एक पार्ट मैंने आज लिया, जो कि 1700-1800 रेटिंग का ये पार्ट है। अगर ये पजल आपको बहुत इजी है तो आप यू कैन गो फॉर द डॉवर्स के इन गेम मैनुअल। अगर आपको ये पजल जो हमने लिए बहुत इजी लगे हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो रेटिंग है वो 1500 के ऊपर है, 1600 के आसपास है। और अगर आपको ये पजल टफ लगे तो आपने डेफिनेटली सिलेमन एंड गेम बुक ही पहले स्टडी करना चाहिए। अगर आप बिगिनर्स प्लेयर हो, अगर आप बेसिक के प्लेयर हो, या आपकी chess.com या लीचेस की रेटिंग 1500 के नीचे है, तो आपकी फर्स्ट बुक होना चाहिए सिलेमेंस एंड गेम बुक मैनुअल। ये आपको चेस बेस, यू जस्ट गो टू द चेस बेस वेबसाइट, और वहां पे आपको चेस बेस में मिल जाएगी ये बुक। आई जस्ट शो यू। आपको जाना है चेस बेस शॉप पे, और यहाँ पे आपको चेस बेस शॉप पे, चेस बेस इंडिया के लिंक पे यू कैन जस्ट गूगल कि चेस बेस इंडिया। यहाँ पे आप ऑनलाइन शॉप में जाइए, और ऑनलाइन शॉप में जाके यू कैन परचेज द बुक्स। यहाँ पे आपको सिल्वर एंड गेम मिल जाएगी। यू कैन बाय द चेस बेस्ड सॉफ्टवेयर ऑल्सो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे आपको एंड गेम के बुक्स में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको देखो पहली बुक मिल जाएगी 1249 की सिलमैन्स एंड गेम बुक। तो ये जो बुक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये बुक अगर आपकी रेटिंग 1500 के नीचे है फिडे chess.com और लीचेस की, तो ये आपके लिए स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट बुक है। आप अनरेटेड प्लेयर हो तो भी आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है। लेकिन अगर आप अच्छे प्लेयर हो, आपकी रेटिंग है, फिडे रेटिंग है, को बेसिक एंड गेम आता है, तो आप डॉवर्स की एंड गेम मैनुअल प्रिफर कर सकते हो। ये थोड़ा लेवल अच्छा है, इसका टफ लेवल है। आ, बाकी जो बुक्स है वो भी अच्छी है, नन बुक, नन चेस एंडिंग एंड ऑल। उसका ये एक है ट्रेनिंग विद द मोस्का, दिस इज ऑल्सो वेरी वंडरफुल बुक। यहाँ पे टैक्टिक्स भी है, स्ट्रेटजी भी है, एंड गेम है। ये बुक इंटर लेवल के लिए है। जो प्लेयर्स है जिनकी 1000 के अबो रेटिंग है chess.com पे, और लीचेस पे 1200 के ऊपर रेटिंग है, ये बुक आप प्रेफर कर सकते हो। बट अगेन I would suggest you in all these books. Again, there is, अगर आपको शॉर्ट कोर्स करना है और चेस एंड गेम का, तो ये है 100 एंड गेम यू मस्ट नो बाय द जेसूस दा ला विला। दिस इज ऑल्सो वंडरफुल बुक, बट इसमें भी कुछ बहुत कम एग्जाम्पल्स दी है। तो अगर आपको डेप्थ चेस एंड गेम की डेप्थ स्टडी करना है तो आपको जाना चाहिए डॉवर्स की एंड गेम मैनुअल के लिए। लेकिन अगर आप बिगिनर्स प्लेयर हो और आपने अभी एंड गेम स्टार्ट किया है, अभी 3-4 महीने पहले चेस स्टार्ट किया, आपकी रेटिंग ज्यादा नहीं है, लाइक यू आर 1200 1300 रेटेड chess.com और लीचेस प्लेयर, तो आपके लिए जो मोस्ट रिकमेंडेड बुक, जो फर्स्ट बुक है, दैट इज सिलमैन एंड गेम बुक। थैंक यू सो मच ऑल।